वकील हो ना, होश आवाज में बात कर रहे हो ना। योर लॉर्डशिप, व्हाट इनके कह देने से मान लेंगे? हाई कोर्ट में ये पिटिशन इन्होंने फाइल किया और डिपोनेंट हैं ये इस पिटिशन के हैं। शॉपिंग मॉल खोल रखा है। जस्ट लुक एट द ऑर्डर, आई एम नॉट सो लिविंग इट कैजुअली। अभी तो ये भाई अंदर है, 420 में इनको भेज देता हूँ यहीं से जहाँ इनका भाई है। दैट इज आइंदा ना करना मिस्टर, समझ रहे हैं आप लोग? ब्लैंक कागज पे से साइन करा के यहाँ फाइल कर दिया। ध्यान रखा करिए, ऐसे खाली कागज पे साइन कराएंगे तो किसी दिन आपका चला जाएगा और कुछ। समझ रहे हैं कि नहीं? साइन करा, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? माइनिंग इंजीनियरिंग का हाल में और आपने खाली कोरे कागज पे साइन करके दे दिया, गलत है। डोंट डू इट अगेन। लोअर कोर्ट में ये थे पहले, बट मतलब हाई ये कोर्ट क्या, ये तो हाई कोर्ट में वकील है ना। हाँ, फिर हाई कोर्ट के लिए इनको ऑथराइज नहीं किया था, ऐसा उनका कहना। तो एफिडेविट दिखाई नहीं पड़ रहा था? एफिडेविट जब साइन कर रहा था वकील के ऊपर ला दिया। As he said, your lordship, As he said, now he will face the consequence. because he मतलब has what? He's so innocent. He's signing an affidavit and giving a power to an advocate. what he said, your lordship, he हैं? नहीं आप तो आपको क्यों ना वो किया जाए? विदाउट एनी अथॉरिटी हाउ हैव यू फाइल्ड? विदाउट एनी अथॉरिटी हाउ हैव यू फाइल्ड सर? अब इनका साइन है, सब कुछ, ये भूल गए? आपके he had appeared in the lower court. नहीं, अपियर इन द लोअर कोर्ट। एफिडेविट तो हाई कोर्ट में है ना सर। High court में, your lordship, what he is saying that he has not authorized for high court. भैया कमाल के आदमी हैं। वकील हो ना, होश आवाज में बात कर रहे हो ना। Your lordship, what he has stated, I am just What he has said, he doesn't know. He has signed the this petition in the high court. Deponent he is ना, तो इतना innocent है इसमें। इनके कह देने से मान लेंगे? हाई कोर्ट में ये पिटिशन इन्होंने फाइल किया और डिपोनेंट हैं ये इस पिटिशन के हैं। कौन है इसका ये आदमी? आलोक भगत कौन भाई है? आलोक भगत इज द ब्रदर। ब्रदर है ना, भाई की ऐसी पैरवी करते हैं ये, आलोक भगत है ना। भाई है ना, इतने आसानी से ना आप लोग अपने दोनों बेल रखो रखो, लिखिए दोनों रहने, डिसाइड ही नहीं करेंगे बेल अपने तो आराम से। भाई जब इनको बताएगा ना तो समझ में आएगा क्या किया। पहले ये तो देख लें, अभी बता दो। offense under, your lordship, क्या एलिगेशन है? allegation is that an oral agreement was entered between one complainant, Dhanesh Ram Salam, and the present applicant in the year 2019 for sale of land which is situated at Curli district, South Bastar, Dantewada, for amount of चार्जशीट क्या पोजीशन? not filed. Not filed. And there are 3 criminal antecedents of the present petition. And I have also stated about the criminal antecedent in scoring. Under section 420, 406. They are the same incident of the same land. Just after this FIR was lodged, the subsequent FIRs have been lodged by the other complainants in the same case. प्रीतम सिंह आप हैं? आप कौन हैं? तो वकील कह रहा है कि आपको तो वही नहीं, उसने पावर ही नहीं दिया आपको, हैं? क्या कह रहे? 2% क्या मतलब? 2 वकील से शॉपिंग मॉल खोल रखा है। शॉपिंग मॉल खोल रखा है, शॉपिंग मॉल खोल रखा है। वो आप लोग को एक ग्राहक बना लिया है। कौन दौड़ के ऑर्डर ले आता है हाई कोर्ट से, वो देखना है मुझे, है यही है। ये एक 26/9 की फाइल है, एक कब की फाइल है? 30 देखा ना अभी सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई इंक्वायरी की, एक फर्जी आदमी के नाम से पिटिशन फाइल कर दी। मैंने तो फाइल ही नहीं किया, अभी जस्ट नाउ रिसेंट केस है, ज्यादा इन पे एतबार नहीं करना। हाँ अभी नहीं, जस्ट लुक एट द ऑर्डर, आई एम नॉट सो लिविंग इट कैजुअली, यू सी टू इट, बिकॉज वी डोंट वांट टू बिकम अ टूल विद दीज फेलोज। The court, अगर you want to play with the court, we will tell you how to play with the court. अभी तो ये भाई अंदर है, 420 में इनको भेज देता हूँ यहीं से जहाँ इनका भाई है। That is will happen. लेकिन मैं नोटिस इशू करता हूँ इनको, let a written affidavit come, his reply, then we see to it. That will much better. It's your saying doesn't suffice. देखिए पहली वाली बेल कौन सी है? 30/9 की है। First bail is, your lordship, by him, 26/9.
26/9 की आप हैं इसमें? इसमें प्रीतम सिंह आपकी सब्सिक्वेंट है? subsequent. अच्छा अच्छा अच्छा, इतना आसान नहीं है डियर। देखिए एफिडेविट इसी का है, हाईकोर्ट ने एफिडेविट दे रहे कि मैंने तो इनको इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दिए। बोलने के पहले समझा दिया करो कि क्या कह रहे हैं, वकील आदमी हो, क्या मजाक बना रखा है हाईकोर्ट का। देखिए ये आप वाला 28 का एफिडेविट है, ये 22 का एफिडेविट है। देखिए the two bail applications have been filed, the aforesaid two bail applications have been filed on behalf of Alok Bhagat before this court. And in the and the first bail application, which is said to have been filed on behalf of the said accused, has been filed through Mr. Preetam Singh, counsel for the applicant, who is present in the court. And the said bail application is said to have been filed on 27th of September. And the said application and MCRC number 7179 of 2024 has been filed through Preetam Singh, advocate, and Shri Kishore Narayan, who has also signed the Wakalatnama, and the said bail application is also present. And the office has reported the said bail application, why this report dated 15/10/2024 to be a defective one. है ना? Is suffering from certain defaults. And the other bail application, this is MCRC number 699 of 2024, has also been filed on behalf of the applicant through his counsel, Shri Anshul Tiwari, who is present in the court. And both the applications have been listed today in the fresh cause list. Eh? Fresh. At serial number 1 and Supplementary serial number. supplementary That- supplementary list 1. ठीक है ना? And the said bail application also suffers from default. There is no defect, only this, the maintainability. Acha, This second bail. and the said bail application is said to be not maintainable, as has been pointed out by the registry to be, has reported the same to be default on account of the fact that the earlier bail application had number 7179 of 2024 has already been filed and pending before this court. ठीक है ना? From the perusal of the affidavit filed in the bail application 7179 of 2024, the deponent of the said bail application is Mr. Anup Bhagat, who is stated to be the brother of the applicant. And the affidavit which has been filed in support of the said bail application is dated 22nd of September 2024, sweared at Bilaspur, Chhattisgarh. It is also noteworthy to mention here that the MCRC number 6994 of 2024, which has been filed on behalf of the applicant, has also been, the deponent of the said bail application is his brother Anup Bhagat of the applicant, son of Durga Lal Bhagat. ठीक है ना? And the said affidavit has been sweared by him on 28th of September 2024 at Bilaspur, Chhattisgarh. On a query being made by learned counsel for the
applicant Shri Anshul Tiwari as to why the second bail application has been filed. The present bail application has been filed on behalf of the applicant, though an earlier MCRC number 7179 of 2024 filed on behalf of the applicant was pending. He tried to justify the same as it is stated by him at bar that the deponent has not authorized the applicant to file a bail application on authorized the Shri Pritam Singh and Kishore Singh advocate to file the present bail application before this court, and they were only authorized to file the bail application before the court below. ठीक है ना? But the matter is a serious one, as two bail applications has been filed on behalf of the applicant in the same crime number, and the deponent of both the cases is his brother Anup Bhagat, son of Durga Lal Bhagat. Hence, let a notice be issued to him to show cause as to why the court should not proceed against him for perjury, for misleading this court by filing the present two bail applications. ठीक है ना? और अभी इनको नोटिस सर्व करा दें कि आरजी के थ्रू, पुलिस के थ्रू सर्व कराऊं, बता दीजिए. इज प्रेजेंट? Is present. The Shri such and such states that he is present in the court and is है ना, बुलाइए उनको. And he has been identified by his counsel Shri Anshul Tiwari. भेज दीजिए, भेजिए, है ना? As आप ही हैं अनूप भगत? आपने क्यों दो फाइल कर दिया बेल एप्लीकेशन? नहीं, ये क्या बात है? आप आए हैं एफिडेविट, आपके वकील साहब ने कहा कि जो है आपने इनको इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया है बेल फाइल करने के लिए हाई कोर्ट में, यही कहा है आपने? आप तो दंतेवाड़ा में लगाइए. नहीं तो धंतेवाड़ा में लगाइएगा. जो हलफनामा आप यहाँ दे रहे हैं ये तो हाई कोर्ट में दिया है ना आपने एफिडेविट, तो आपको नहीं समझ में आ रहा था कि धंतेवाड़ा में साइन कर रहे हैं कि बिलासपुर में साइन कर रहे हैं? आप एफिडेविट पे साइन तो आप ही ने किया है ना, दोनों बेल में सिग्नेचर आपने किया है कि किसी और ने किया है? दंतेवाड़ा में साइन किया था, ये करवाए थे. क्या खाली कागज पे साइन कराते हो क्या आप लोग? हैं, दंतेवाड़ा में कराते हैं क्या? खाली कागज पे साइन कराते हैं? क्यों? यहाँ साइन कराए तो वहाँ कराए थे. सही बता देना, नहीं तो और फंसते जाओगे. सही बता दो. यही सब गलत करते हैं ना. देख लीजिए आप लोग, बुला लीजिए. चंदेल साहब आएंगे नहीं आज? बुलाओ, उन्हीं को बुलाओ, देखते तो रहे, लाइव टेलीकास्ट है. समझ रहे थे ना? वाजपेयी जी हैं, उनको भी बुला के दिखा देना वीडियो. वरुण शर्मा को भी. दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स. देख लेंगे व्हाट इज हिज फॉल्ट, देन ही इज करेक्ट. आइंदा ना करना मिस्टर. समझ रहे हैं आप लोग? जैसे देखिए, आप दस्तखत ऐसे करा लेते हो. हाउ कैन यू डू लाइक दिस? मिस्टर समीर सिंह, जस्ट कम हियर, सी टू इट. देन व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ द डिपोनेंट? ब्लैंक कागज पे से साइन करा के यहाँ फाइल कर दिया. The deponent and the deponent is present and on a pointed query being made from him, he has stated that he has not authorized Shri Pritam Singh and Kishore Narayan to file the present affidavit bail application before this court, and and when he was also queried by the court as to how he has signed the affidavit, and he states that he has only signed तो मत लिखो क्या है ना. ठीक है. Shri Pritam Singh and Kishore Narayan, learned counsel appearing, who has filed the earlier bail application, could not when confronted with the contention given by the deponent of the present case, they could not give a plausible reply and state that the present bail application may dismiss as withdrawn, and the bail application filed by Shri Anshul Tiwari of the applicant be heard and disposed of by this court. In considering the fact
आइंदा मत करिएगा, हैं? किनके खिलाफ? जो तीन ये है, एंटिसिपेटरी तो एमसीआरसी है। ये MCR 3 तो वो भी किसने फाइल किया है? आप ही लोग ने? उसमें भी यही हालत है। नहीं, मैंने उसमें नहीं। तो एमसीआरसी आपके द्वारा, इनके द्वारा फाइल करा नहीं कि फ्रेश काउंसिल के द्वारा? नहीं, वो ऑलरेडी कर चुके, पेंडिंग है क्या? पेंडिंग। छोड़ दो उसको, लिखने क्या जरूरत है उसमें, तो तभी तो क्या have submitted that could not give a satisfactory reply. Considering the facts and circumstances of the case, as the reply query made by this court from Shri Kishore Narayan Pritam Singh Advocate appears to be self-explanatory. Hence, the present petition is dismissed as withdrawn with a caution to the two learned advocates that they should not be cautious in future and no future instances should be brought into the notice of the court, failing which the court would be compelled to take action against them. Dismissal is withdrawn कर दीजिए। हैं? उसमें अगर इंस्ट्रक्शंस है तो उसको आप बहस के, हम तो इसकी बात कर रहे हैं, उससे हमसे क्या, हम लोग से क्या मतलब है? और ध्यान रखा करिए, ऐसे खाली कागज पे साइन कराएंगे तो किसी दिन आपका चला जाएगा और कुछ, समझ रहे हैं कि नहीं? और फिर कंप्लेंट करके भेज दीजिएगा, वकील ने हमारी जो है पूरी फैमिली वो घर रखवा लिया अपने पास। दिस इज व्हाट वी आर रिसीविंग द कंप्लेंट्स। व्हाई डू यू पीपल साइन लाइक ब्लैंक पेपर्स पे? क्यों साइन करा? आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? कितना पढ़े लिखे हैं आप? क्या कॉलेज में पढ़ते हैं? किस कॉलेज में हैं? कौन से क्लास में माइनिंग हैं? माइनिंग इंजीनियरिंग माइनिंग इंजीनियरिंग हाल में, और आपने खाली कोरे कागज पर साइन करके दे दिया। गलत है। डोंट डू इट अगेन, डोंट डू इट अगेन, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तब तो ये तो हमारे सामने आके कहीं हो गए तो फिर दौड़ते रहिएगा पूरी जिंदगी। डोंट डू इट मिस्टर। दोनों आदमी को मैं देख लिया, इसीलिए मैं आप लोग से 10 बार कहता हूँ कि वकालतनामा पे जॉइंट सिग्नेचर्स मत करा करिए। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए मना करता हूँ। कौन वाली थी ये वाली जो गई हैं? कौन वाली? प्रीतम सिंह वाली कर इसमें सर विड्रॉन देख रहे हैं कितना? ये वाली थी जिसमें से वो विड्रॉन हो गई ना, ये वाली बात। वो तो इन्फेक्चुअस हो गई होगी इनकी, जब ये तो जेल में चले गए हैं तो एंटिसिपेटरी। अच्छा, फॉर्म ठीक, ध्यान रखिएगा मिस्टर। यदि आप लोग नहीं समझते हैं ये सब चीज़ें ना, इट विल, यू पीपल आर यंग लॉयर्स, अदरवाइज यू पीपल हैव टू फेस द म्यूजिक, है ना? फिर कोई नो वन विल एबल टू सेव यू पीपल। मैं वही लगा कि ये कैसे हो सकता है, मगर he was at fault that he had signed the blank papers and given it to you people. आइंदा मत करिएगा मिस्टर, ध्यान रखिएगा। भैया आधा समय तो ऐसे भी सब में चला जाता है, 10 मुकदमे निकल गए होते हैं। चलिए ये डिसमिस हो गया ना, ये अंशुल वाली हो गई, डिसमिस। चलिए अब इसमें